some. I don't write so much. I'm not, yeah. So I don't write at all. I don't like physically write or type anything. At the most, if I think of something funny, I jot down the points, and then I go on an open mic, and then I improvise with those points till it becomes something that I like. Then that becomes the set. Hello everyone, I'm Surmeet Singh Lamba and welcome to the 4th episode of Thamba with Lamba. Stand-up comedy has always been a part of my life. In fact, I am a failed stand-up comic, but there are always some stand-up comedians I've looked up to. And one of my favorites, Rahul Subramaniam, is here with us today. Welcome, Rahul. Thank you. I thought you were going to say one of my favorites, Abhishek Upmanyu, who couldn't make it, so we have Rahul Subramanian here. Thanks, Surmeet. It's such an honor to be here. Since I was 4 years old, I've always dreamt of being part of Thamba with Lamba. And dreams do come true, Surmeet. Yeah. नहीं सर, एक्चुअल में जब मुझे पता चला कि आप एम्स्टर्डम आ रहे हो, हाँ जी, और मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले भी बोला कि जब मुझे दिस इज़ माय 4th पॉडकास्ट, बट मैं नर्वस आज पहली बार हूँ. अरे ओके. मतलब आपका सर है कुछ आपके अंदर एक स्पेशल जो मुझे थोड़ा सा डरा रही है. तो आई होप आई विल बी एबल टू डिलीवर वॉट एवर आई हैव प्रिपेयर्ड टुडे. बट सुपर वेलकम. Thank you so much. And you're not a failed stand-up comedian. ओके, ठीक है. You are the reason why we are successful stand-up comedians. थैंक यू सर. समझ रहे हो आप? थोड़ा थोड़ा. बस वही. बट सर, चालू करने से पहले, मतलब इवन बिफोर आई गो इनटू क्वेश्चंस, आप ये जो इंस्टाग्राम पे आप जो रिप्लाई करते हो, हाँ जी, कहाँ से करते हो सर? कैसे कोई आपका कोई चैट जीपीटी आपने बना रखा है क्या कि कैसे किसी का पुट्ठा मतलब उल्टा ही आंसर देना है? हाँ. वो हाउ डू यू स्टार्ट सर दैट? How do you start? नहीं, स्टार्टिंग हाउ डू यू डू इट? मतलब एक का कर सकता है बंदा, दो का कर सकता है, बट फॉर एवरी आंसर यू हैव अ डिफरेंट और लाइक अदर टेक. करेक्ट. उसके लिए वो होना चाहिए. यू शुड नेचुरली आप उल्टा ही सोचना चाहिए. ओके, दैट शुड बी द डिफॉल्ट सेटिंग. तो आई थिंक काफ़ी, और ऐसे मैंने बहुत चीज़ें की है, नॉट जस्ट नाउ. कॉलेज से कर रहा हूँ, स्कूल से कर रहा हूँ, टेकिंग पार्ट इन कॉम्पिटिशन्स एंड बीइंग ऐसे वियर्ड चीज़ें, एड मैट शो, प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहाँ एवरीवेयर you're playing an anti character, or you have to, that's what not the funny part. Funny comes when you are surprising the audience with something एकदम ही different. और वो तो in a sense मेरा जॉब है ना अभी. Comedy is all about that. Instagram में मैंने चालू किया था बिकॉज मुझे एक तो आई कांट डू फोटोज, एडिटिंग, वीडियो बनाना, वो मुझसे ज़्यादा नहीं होता. अभी तो रील्स में ईजियर हो गया है, बट बैक देन फॉर मी एनीथिंग विद जस्ट मी टाइपिंग टेक्स्ट इज ईजी. सो आई थिंक दैट्स हाउ इट स्टार्टेड. बट हाँ, अभी ज़्यादा हो गया ना, अभी बंद करना चाहिए. बिल्कुल भी नहीं. वी लुक फॉरवर्ड टू योर Q&A सेशंस. मतलब मुझे अभी कोई याद नहीं आ रहा है, बट हर एक जो आपका आंसर होता है, दैट इज सर अनदर लेवल है. एक के बाद एक के बाद एक. तो दैट्स एक्चुअली योर ऑलरेडी एन एक्ट. तो बिल्कुल सर, मतलब योर इंस्टाग्राम इज लाइक, मेरी बीवी ने स्पेशली ये मुझे क्वेश्चन बोला था कि कौन मैनेज करता है? आप खुद ही आंसर करते हो, बट अभी आपने बता दिया आप खुद ही आंसर करते हो. इट्स वेरी रिस्की टू हैव समवन एल्स मैनेज योर इंस्टाग्राम अकाउंट. दैट्स ट्रू. कोई कुछ डाल दे तुम्हारे नाम से और फिर रिस्क नहीं लेना चाहता. बिल्कुल बिल्कुल सर. बट सर, जैसे आपका जो एक आप खुद एक ब्रांड मैनेजर थे, बहुत मतलब खराब, कॉर्पोरेट खराब, बहुत ही खराब ब्रांड मैनेजर था मैं. बट वो हेल्प करता है आपको अपना इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया की मार्केटिंग, स्पेशली लिंक्डइन, जिसमें यू आर किलिंग इट. ओह, आई डोंट नो अगर वो हेल्प कर रहा है. हो सकता है इम्प्लिसिटली इट इज योर माइंड वर्क्स इन अ सर्टेन वे बिकॉज यू हैव हैड सम एक्सपीरियंस. बट ऐसे नहीं कि मैं बैठ के वहाँ पर बोला 4 P's ऑफ मार्केटिंग ये है, चलो, और फिर मैप कर रहा हूँ, मैं स्वॉट एनालिसिस कर रहा हूँ, फिर अपना इतना तो सोच नहीं रहा है. आई एम गेसिंग हेल्प करता होगा. लिंक्डइन में तो लॉट ऑफ द थिंग्स आई पुट, दे आर वेरी कॉर्पोरेट जोक्स, सो दैट कम्स फ्रॉम माई एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड. देखो सुमित, प्रॉब्लम ये है ना इसलिए कि बहुत सारी चीज़ हम जो करते हैं ना, हमको एक्चुअली नहीं पता हम कैसे करते हैं. बट हमको क्या होता है ना, व्हेन यू पुट अस इन इंटरव्यूज, नो,
हमको बात करना भी पसंद है, तो हम कुछ भी बोलते हैं. तो मैं आई नोटिस माई सेल्फ सेइंग थिंग्स. I was almost about to go in a direction wherein I was going to say, yeah, it helps a bit, you use some of this. And मैं बोला क्या फेंक रहा हूँ मैं, मुझे पता नहीं है. हो जाता है, हो सकता है कि उसका कुछ इन्फ्लुएंस हो, बट आई कांट टेल यू 100% है कि नहीं. हाँ, होता होगा थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस. बट कैसे सर कॉर्पोरेट से स्टैंड अप कॉमेडी, बहुत मस्त. स्पेशली जो आपसे 2014 का व्हेन यू स्टार्टेड टू 2016 की जर्नी. Damn, well done, researched, well researched. इंटरनेट पे इट इज 2015 बट एक्चुअली इट इज 2016. That's why I'm saying well researched. Yeah. तो सर उस जर्नी के बारे में, लाइक हाउ डिड इट ऑल स्टार्ट? Oh पापा, ये वाला स्टोरी मैंने इतनी बार बोला है कि now I don't even know the version that is currently in my head is it the actual version. बहुत सारे हैं ऑनलाइन, मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा. मैं अपने जॉब से थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड था, बट आई डोंट नो व्हाट वाज फ्रस्ट्रेटिंग अबाउट माय जॉब. आई थॉट द प्रोफाइल इज फ्रस्ट्रेटिंग, मे बी कंपनी इज कोई और प्रोफाइल में जाऊँ तो बेटर होगा, ऐसे ऐसे थॉट्स थे. एंड देन आफ्टर टॉकिंग टू पीपल अराउंड एंड लाइक क्लोज पीपल रियलाइज कि इट्स नॉट द कंपनी और द प्रोफाइल, इट्स जस्ट दैट मेरे लिए वो है नहीं. सो आई स्टार्ट लुकिंग फॉर ऑल्टरनेटिव्स एंड स्टम्बल्ड अपॉन स्टैंड अप कॉमेडी. As it started as, it didn't start as a career, it was something I was doing along with my work. तो रात को जाता था मैं, वर्ली में काम था, then drive to Bandra and then do stand up and then yeah, so ऐसे ही start हुआ. कभी and then I started liking it. Yeah. कभी आपने अपने मैनेजर को ऐसे, जैसे अभी Q&A करते हैं, कभी मैनेजर को ऐसे उल्टा आंसर या कुछ आपके मैनेजर नहीं बोला यार इट्स टाइम फॉर यू टू गो अवे एंड डू स्टैंड अप कॉमेडी? Actually मैं बहुत लकी था in terms of मेरा जब 2013 को I joined the Mahindra corporate brand team in Worli in Bombay. I shifted from Bangalore का Mahindra retail team to here. And Bombay का team, I was very lucky because my boss was extremely helpful. Not just boss, the whole team. They came for my first stand-up show. Okay. They came in numbers, they cheered for me. Next day मेरा boss ऐसे proudly email डाला कि देखो मेरे टीम का राहुल ने पहले performance ओपन किया. माइक के लिए कि पहले स्टैंड अप जो प्रॉपर? पहले open mic. Not the first open mic. No one knew I did the first open mic. But the third open mic in which I was like it was a competition and I was in the finals of that. So they all came. So one of my colleague, her name was Karen. She's from Mexico. She was doing a 2-year thing there. उसका farewell था. And I said कि I can't make it for the farewell क्योंकि. And I didn't want to say why because I was also nervous. And then they were like, ऐसा कैसे नहीं कर सकते last minute. Then I told Karen कि Karen, this is the reason. मेरा आज finals है, या तो मैं आता, तो I'm telling you, but that's why. And Karen ने क्या पूरा plan change कर दिया, मुझे बताया नहीं. Karen, she told my boss and everyone. So the whole team surprised me and they came for the show, which was surprising. Which I mean, when I went on stage and I saw them, I was extremely nervous to see. But yeah. So they were extremely supportive all the time. I was doing stand-up along with my work. So I used to, after my work, go perform. So perform till late and then come back next day morning. I used to be late a few times. कभी मेरे टीम ने ऐसे कुछ, इनफैक्ट दे विल बी लाइक अरे राहुल लेट आए क्योंकि कल उसका शो रहा होगा तो उसको ज़्यादा परेशान, ऐसे था. इट वॉज जस्ट अमेजिंग. आप इंडिया में ही जॉब करते थे ना? मैं इंडिया में ही जॉब कर रहा था एंड महिंद्रा जैसे कंपनी में काम कर रहा था और ये था. तो या आई थिंक अगर वो नहीं होता ना तो इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट फॉर मी टू. बिल्कुल बिल्कुल. या बट वहाँ पे आपकी टीम थी एंड अभी आपने लंदन में परफॉर्म किया, उसमें भी बेसिकली आपकी टीम थी, मतलब ऑडियंस में, मतलब फ्रॉम ऑफिस की टीम टू अ टीम जिसमें कन्नन थे, कुमार वरुण थे आपके शो में. या हाउ डू यू फील व्हेन यू आर ऑन स्टेज एंड यू नो दैट यू नो my peers or my colleagues or my seniors, or it doesn't now. There was a time when I used to be nervous about it. Early on I remember, and this is like my first time I think Kanan and Biswa had come to the show. I mean, it was an open mic. I was hosting and I had just heard about them. I had seen them. Okay. First time when I saw, I was very nervous, like, oh, how will they perceive my stand-up? What if they think, you're worried about what others will think, and you form, and others don't even care. In the sense, no one's forming so much, itna judgment कोई नहीं कर रहा. People are just watching and they're going. yeah. But you are overthinking. तो initially होता था. Right now, तो it doesn't. I'm just happy that my friends are coming types. Okay. So it doesn't. In fact, I was happy. So I think
Yeah, I'm saying it as if that's not enough. No, it's more than enough. It was nice that Varun came, Manvi came, and Kanan came. I was at the tech room and Kanan Adar was was there. sitting was very close to the tech room, Yeah. and Kanan ki jo laughter thi was the loudest. He was having a good time in your show, sir. Yeah, That's yeah, what yeah. I can say. Did he have his earpods on? No, sir. No, okay then. It might be my show. हाँ जी, हाँ जी. Yeah, we can't be sure, but yeah. नहीं, उनके पास कोई he was not having any AirPods. Kanan's also very help. Kanan also gives constructive feedback, so it's nice. I value Kanan's feedback. That's great, sir. चलिए सर, अब चलते हैं आपकी कॉमेडी जर्नी पे. Let's talk about, you know, Oh God. कब आपने, मतलब देखिए, हैविंग फर्स्ट ओपन माइक, और मैं नहीं जाता क्योंकि इट हैज़ बीन 2014 में मैं फर्स्ट 2014 मई में, जिसमें आप रोते रोते घर गए थे, आधे रास्ते, पूरे आधे रास्ते तक ज़्यादा हो जाता. बहुत ज़्यादा हो जाता. उसके बाद सेकंड वाला जिसमें एक दोस्त बंदा को लेकर, बेसिकली हंस रहा था, जिसने आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाया. Second one, नहीं हंस नहीं रहा था. For the second open mic, I took a friend along. I convinced him he's funny. And then on the way to the open mic location, I made him so nervous because every joke he was saying, I was like, this won't work. I'm like, I've done it. तुमको नहीं पता कैसे. Then he got so nervous. When we reached the venue, he backed out. Okay. And his failure gave me confidence. That's why I'm saying you're not a failure in stand-up comedy. You have pushed other people to succeed. It's a noble job. It's charitable job. No. Thank you, sir. But कौन सा? Okay, but I am very serious. Why, if you're interested in stand-up, if you were, why are you not giving it a shot now? सर बिकॉज जब मैंने फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था स्टैंड अप कॉमेडी, तो यहाँ पे कोई आपने stage नहीं stand-up था. start किया था? हाँ, आई डिड Thank स्टैंड you अप. so much. It's such a lovely profession. आपने start किया हमारे लिए बहुत अच्छा लगा. अरे नहीं, मैंने स्टैंड अप कॉमेडी करना था मुझे. मेरे को पता है, मैं फालतू के जोक्स मार रहा हूँ. सॉरी. हाँ, सॉरी. नहीं, बट ठीक है सर. तो बेसिकली यहाँ पे स्टेज नहीं था, तो मुझे ये लगा कि क्योंकि मेरे को हिंदी में करना था, हाँ, तो मैंने फिर स्टेज बनाया यहाँ पे हिंदी का. बट वो खुद जो ऑर्गेनाइज करना पड़ा ये सब, correct. आई लव द ऑर्गेनाइजिंग पार्ट मोर देन परफॉर्मिंग पार्ट. तो इसीलिए आई एम डूइंग दिस. But if you still have that in your ये कि यार ये एक चीज करना था, नहीं हुआ, it can still be a hobby. You don't have to do full time, but you can still give it a shot. I'll try my best, sir. But Because you are a very funny person. I know that. We have interacted. So I'll give it a shot, sir. you should, yeah. बट तो उसका सर अभी भी, जैसे आपने पहला जो ओपन माइक किया होगा, हाँ जी. 4-5 मिनट का होगा, या हाउ लॉन्ग वाज द परफॉर्मेंस? 4 minute. 4 4 minute was the stipulated time. And then they cut it down to 3 minutes because I was not on the lineup. I requested. First open mic था and I was sent last. तो बोला कि यार 3 मिनट कर दो, खत्म, बंद करना है जगह. डू यू रिमेंबर द फर्स्ट जोक जिसमें आपको लाफ्टर आया था? वो ओपन माइक में तो नहीं था. नहीं, बट स्टिल जो अभी तक आपने जब ये हुआ कि यार ये मैंने क्रैक कर लिया, नाउ हाँ, I don't remember the version of it. मतलब a much better version became a part of my stand-up special later. It was about my wedding, Tamil wedding. So I think it's one of those jokes. कल में उड़ेगा में था ये. Correct. Yes. और सर 5 मिनट से 10 मिनट का रास्ता, लाइक व्हेन डिड यू डू योर फर्स्ट सोलो? First solo, I think I did it in 2017. Yeah, 2018 was my special release. 2017 was the first time I did 1 hour show when people came to just see me. एंड ticketed show. Ticketed show, yes. एंड हाउ वाज द फीलिंग सर? Always great. कोई फैमिली मेंबर आया था उस शो में? हाँ, I think my wife, my brother, and my very close friend had come. So कैसा लग रहा था सर? मतलब उसके बाद यू शुड बी लाइक टॉप ऑफ okay, द now I have वर्ल्ड. to like try and go back in memory line. No, I'm sure I was nervous, and also the fact that जब आप स्टेज में जा रहे हो और अब देख रहे हो 100 people have come just to watch you, first time ऐसा हो रहा है, that also feels great. So and then the first joke में जब laugh आ जाती है, then you become comfortable, and then I think I enjoyed that a lot. It was. बट सर जैसे आपने बोला आपकी वाइफ भी आए थे, तो यूजुअली वाइफ का एक काम होता है या तो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करना या आपका मजाक उड़ाना. आपके लिए कैसा था? कि कैसे शो के बाद आपकी एक आदत है, आप फीडबैक लेते हो सबसे. हाउ वाज इट? नहीं, आई थिंक मेरी वाइफ तो काफ़ी हमेशा से सपोर्टिंग ही थी. आई डोंट थिंक सो उसको शी वॉज वेरी एक्साइटेड फॉर माई जर्नी. तो वो ऐसा था कि यार कोई कुछ कर रहा है, बिकॉज ब्रांड मैनेजर थी वो भी. अच्छा.
हाँ, तो उसके लिए वो बहुत एक्साइटिंग था. इवन फैमिली, आई थिंक ऑल ऑफ देम वर वेरी, सब बहुत खुश थे कि कोई तो हमारे फैमिली में कुछ अलग कर रहा है, या फिर कोई तो कुछ ऐसा कर रहा है जो पसंद है, या ना. तो मुझे और फैमिली फीडबैक या फिर क्लोज फ्रेंड्स फीडबैक दे लकीली काफ़ी सेंसिटिव थे अच्छा. लोग, एंड दे वर नॉट. इनफैक्ट 2015 I'd come for a holiday and we were going on holiday, and एक रात को आदित्य और मैं आउटसाइड आदित्य's हाउस हाजमोला खा रहे थे, जो करते हैं यहाँ पर एम्स्टर्डम में हाँ, घर मैं के समझ बाहर. गया, हाँ, समझ गया, समझ गया. और हम बातें कर हाजमोला. हाजमोला खा रहे थे, एंड देन वी वर हैविंग अ टॉक, एंड दैट टाइम आई रिमेंबर टेलिंग हिम, बोथ ऑफ अस वर टॉकिंग अबाउट, एंड आई रिमेंबर टेलिंग माय साइड ऑफ स्टोरी कि यार आई रियली लाइक दिस एंड आई होप आई कैन मेक दिस फुल टाइम. सो ऑफ कोर्स ही मस्ट हैव बीन एनकरेजिंग ओनली. तो वैसे ही है. तो आई थिंक एवरीवन अराउंड यू इज वेरी एनकरेजिंग. ऑल्सो अभी उम्र हो गई है ना, नो वन कैन, क्या ही डिस्करेज कर लेंगे आपने तो देख लिया डिस्करेज में क्या ही, जॉब से ज्यादा जॉब कर ली आपने. बट आपके पेरेंट्स दे वर एब्सोल्युटली फाइन विद इट कि मैं अब जॉब छोड़ रहा माय हूँ. डैड हैड जस्ट वन थिंग, ही सेड डू व्हाटएवर यू वांट, just don't come for money to me. And I was like, this is a very fair yeah. अभी सडनली आके मेरे पापा को बोलूँ कि 15 लाख चाहिए इसमें, तो मेरा पापा नहीं, अब ये तो नहीं होगा मुझसे. बट आपने जब जॉब छोड़ा आप उस तब तक यू हैड ऑलरेडी वॉन दैट यूट्यूब का रैंडम चिक बम के लिए. उसके बाद ही आई लेफ्ट माय जॉब. हाँ जी, हाँ जी. तो फिर यू ऑलरेडी हैड सम यू नो. No, when I left, and also as a brand manager and MBA brand manager, you get paid well. So my salary was quite good. So I had lot of savings. So हाँ, इतना इशू नहीं था वो. नहीं, क्योंकि स्पेशली यू नो एक मिडिल क्लास फैमिली में, आई होप मैंने जो रिसर्च की उसके हिसाब से मिडिल क्लास फैमिली, हाँ, उसमें ये मेरे decision पेरेंट्स है. तो मिडिल क्लास थे. आप तो कह रहे नहीं नहीं टॉप कॉमेडियन फ्रॉम इंडिया. नहीं, वो ऑनेस्ट भी रहना चाहिए ना. अब कब तक हम लोग बोलते रहेंगे कि हम मिडिल क्लास है, तो वो तो एम्स्टर्डम में नहीं बैठते हैं मिडिल क्लास लोग काफ़ी. तो नहीं सर, अभी हम लोग एम्स्टर्डम के मिडिल क्लास. एम्स्टर्डम के मिडिल क्लास, एम्स्टर्डम के मिडिल क्लास और अपर क्लास और लोअर क्लास में ज़्यादा गैप ही नहीं है ना. कुछ भी नहीं है. तो एक ही क्लास है आप लोग. दूर से देखो थोड़ा, रॉटरडैम से देखो तो आप सब एक ही क्लास हो. हाँ जी, हाँ जी सर, वो तो है. तो बट हाँ, और मम्मी का कुछ नहीं कि नहीं नहीं, उनका भी नहीं. एवरीवन लाइक, ऑल्सो आई वाज 28, क्या ही बोलेंगे. ओके. So no, so basically my parents, they're like, you're a grown adult, you take your own decisions. तो वही था. तो आप हमेशा से वो कुछ एक घर के अंदर वैसा आपका इमेज था कि इसको तो बोलने का मतलब ही नहीं है, करेगा जो करना है. नहीं नहीं, नेवर. I was like a very good boy. I was like, माँ बाप की बात सुनता है, सहमा सा है, डरा हुआ सा है, ऐसा था. So I was not. बट इसी इमेज के साथ जब मैं जब देखिए पढ़ाई करनी पड़ती है, बट आपको मैंने देखा यू आर ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग योर कॉलेज इन फुटबॉल. Yeah. It wasn't tough to represent my college in football. I must say that. I wasn't like competing with Manchester United academy players, so it wasn't tough. I keep saying Manchester United, although I don't like that club much. Liverpool is my favorite. But yeah, but the point is, it wasn't tough to be like I had to तो आप compete. कौन से पोजीशन में खेलते थे सर? कौन से पोजीशन में? See, positions are decided at the start of the game. हाँ जी. उसके बाद it's up, you are free to choose your position during the game. That's so Indian football. That is so I was left forward, and then I was anything but the goalkeeper. Okay. Yeah, And but I was very good relatively compared to other people in my college. I was very good. Yeah. सर, रोनाल्डो, Hmm. मेसी, हाँ. आप किसको You want to choose between Ronaldo and Messi? It's a very easy decision. Messi, always. Ronaldo is a great player, but come on, Messi is out of the world. Messi is not from, yeah. And I've seen Messi. I've seen both of them play. Not that one game can decide, but I've seen Barcelona play in Camp Nou. In a Champions League final, and I have also seen Liverpool versus Real Madrid in Kiev, Champions League finals. Messi, when he plays, it's just like you can see, it's a treat to watch. It's beautiful, and also you can see that, and I can see he has a very thing, right wing se aate hain, he cuts in and then he passes or scores.
and we were just behind the goal, and we are seeing him cut, and this guy, and it's almost like you're like, oh, he's going to shoot now. He's going to shoot now. Not just me, even the defenders are feeling what we are feeling. He's going to shoot now. And every time you feel he's going to shoot, he doesn't shoot. And the moment you feel now he might not shoot, that time he shoots. So it's just incredible. And that team had Xavi, Iniesta, they had Sergi Busquets, David Villa. So all of them, they had great players. And they were all amazing. But Messi is like, I think there's no player better than Lionel Messi to have played the sport. Yeah. कह सकते हैं सर. बट जैसे आप फुटबॉल खेलते थे और क्या करते थे? Volleyball. कॉलेज वॉलीबॉल. हाँ जी. Very surprising, I know. नहीं, not surprising, but Yeah, because again, when I used to play pitch behind as a supplier. Now in real volleyball, you have to keep rotating. हमारे यहाँ In our college volleyball, you don't have to do it. You can do what you want. वो तो है. So I used to play volleyball, badminton for a while. I was like the 5th choice badminton player in my class. Cricket तो कौन नहीं खेलता? क्रिकेट तो हमारे सब. Everyone plays cricket. मुझे तो अभी भी समझ नहीं आ रहा टेलेंडर्स बैटिंग क्यों नहीं कर पाते. हमारे यहाँ तो हमेशा सारे ही खेलते हैं. Correct. अभी चेंज हो रहा है ना, शायद से, पता नहीं मुझे. नहीं. अभी भी शामी नहीं होता उनको. नहीं. 6 तो मारा बीच में. बट वैसा नहीं है. हाँ. ये मुझे भी हम टेलेंडर्स बैटिंग की, बट एक टाइम था जब विकेट कीपर्स बैटिंग नहीं कर पाते थे. हाँ, वो चीज़ है. तो वो तो चेंज हो रही है. वो चेंज हो रहा है. बट अभी तो खैर विकेट कीपर सबसे अच्छे बैट्समैन. खैर. बटलर, धोनी. और सर इसके अलावा कुछ स्टेज की कुछ एक्टिविटीज़ जो करते थे आप? प्लेस बेस करता था बचपन से. was part of plays, theatre, not theatre, but society में जो theatre होती थी या फिर college में take part in debates, elocutions. That's all these things. So my dad my dad wanted me to be part of all this since I was a kid. So my dad used to write my elocution. Topic आता था, my dad used to write. Full ratta maar ke I used to just exactly go on stage and say the same thing. And even expressions I used to. So I second standard, third standard mein kya hi hai? So I used to do that, I remember. And yeah, so I always liked being on stage, but I was always nervous being on stage. But I still went on stage. And then जब आपने मूवी की, मूवी? हाँ, आप एक में लक्ष्मण भी बने थे, right? That's a web series. हाँ जी. Movie I've declined a couple of offers. They didn't offer me, but I declined it in my head, Yeah. हाँ जी. But how was it, like facing the camera without audience? Oh, it's fun. It depends on the director, honestly. So the director makes all the difference. And having done so many videos with AIB, and majorly Tanmay used to direct, it makes you feel so comfortable. You don't have to do anything. So वो बाहर समझ में नहीं आता है, but so much of a good movie, a web series is the director's skill. If the actor is brilliant, which means the director has done something amazing. So behind the camera. So you don't have to. You have to just follow instructions. And that's one thing which I've always been good at. Follow instructions. Yeah. और अभी और कोई मूवी या वेब सीरीज का चल रहा है सर? नहीं सर, कुछ नहीं चल रहा है सर. But it's not that fascinating for me anyway. अच्छा. I like it as a hobby. But it's not like I don't want to. Acting is a very tough job. अच्छा. बहुत tough है. But doesn't it come naturally to stand-up comics? Like No. Who said? नहीं, asking. नहीं. मैं भी प्यार से who said ऐसे पूछ रहा हूँ मैं. बोला था सर किसी ने. नहीं. It doesn't come naturally. Acting, so when we play characters on stage, these are characters we know or we like or we have experienced. So we are good at that. It's like you will have a character, your uncle's character, your teachers, or something that you might be good at. Acting is about the range. So the moment they ask us, I should not say everyone. The moment they ask me to play something else, I'm not that good at it. And acting requires a lot of patience. Like right now, if you see, there are 3 cameras here, like capturing. But we are like, it's a fixed set. Yes. We are sitting here, so it's easy to... Now imagine if there is a moving, like there is an, यहाँ से एक angle, I'm talking to you, then they have to shift. The whole lights have to shift. So for the same scene, an actor might say a line in a character, and then they will cut, and it will take 2 hours for them to change the whole setting, and that person has to go back, feel the same way. And a lot of times things are not shot chronologically because That's of efficient production के लिए. So sometimes you will shoot the climax first, and then you will go. So it's too much. You require a lot of patience. So हाँ जी.
Yeah, for me acting, it's not. Not that. I forget what my character was. So and हाँ जी, हाँ जी. हाँ. तो नहीं. But hey, if there is a movie, it's a Bollywood movie or a Tamil industry or Hollywood. If you are looking for a good-looking Indian boy, Who can play football, volleyball, badminton? yeah, but that's not a skill set they're looking. Okay. Who can act decently. Hey, maybe if you make a movie, cast me as Serious time pass films. cast me as a inspector. I want to be an inspector. I want to be a police inspector. What's wrong? I want to be a police inspector. Okay, sir. Huh? Okay, पक्का. Or I want to be the guy who calls the inspector. कैसे कॉल करोगे सब इंस्पेक्टर? Like something happens and I'm like, वो देखो, Inspector Vijay. And then the camera pans from me, that's it. I just say, that's Inspector. नहीं, बट अगर आप इंस्पेक्टर बनोगे और आपको एक ऐसा सीन मिला कि क्या कहते हैं, आपको जाके गुंडे की पिटाई करनी है. हाँ, पहली बात तो उसको कॉलर से पकड़ना है. but कैसे करोगे आप? आपको देख के इतना डर नहीं लगता है. हाँ, स्वीट बॉय कैसे मतलब आप? वो अभी वैसे भी होते हैं ना, इनोसेंट लुकिंग विलन्स. हाँ, वो ज़्यादा साइकोपैथ लगता है ना उन लोग. आप नहीं लगोगे. लगूंगा, मैं लगूंगा. आप रोल दे के देखो एक बार. ऐसा कन्विंस करूंगा, आई विल बी द बेस्ट इंस्पेक्टर एवर. करण जौहर. करण जौहर कर लो, कोई भी पता चलेगा. करण जौहर. फाइन. चलिए सर, मूवी से फिर से हम लोग कॉमेडी पे आते हैं. हाँ जी. एक क्वेश्चन मेरे को बहुत देखिए, आपने क्राउड वर्क किया, आप प्रॉपर सेट भी करते हो. जब भी मान के चलो आप कर रहे हो कॉमेडी, एक टाइम आता है ना कि राइटर्स ब्लॉक आ जाता है. यार आप समझ नहीं आ रहा कैसे लिखें, आगे क्या लिखें. हाँ, आप हाउ डू यू गेट ओवर इट? मैं फिर छुट्टी पे चला जाता हूँ. मैं टीवी देखता हूँ, मैं कुछ भी करता हूँ. अबे देखो, एट दिस स्टेज मे बी इट विल चेंज टुमारो. आई एम नॉट दैट, इतना मुझे वरी नहीं है. सो आई वॉज डूइंग क्राउड वर्क फॉर कपल ऑफ ईयर्स. क्राउड वर्क में तो देर इज नो स्क्रिप्ट एनी वे, सो देर इज नो राइटर्स ब्लॉक. ठीक है. एंड देन आई हैव अ शो ऑलरेडी, सो देर इज no writer's block at this point, but it might come at some. I don't write so much. I'm not, yeah. So I don't write at all. I don't like physically write or type anything. At the most, if I think of something funny, I jot down the points, and then I go on an open mic, and then I improvise with those points till it becomes something that I like. Then that becomes the set. बट सर, आप लोग की लाइफ इतनी बिजी है, आप लोग छुट्टी ले पाते हो? लाइक यू सेड, यू नो, आई जस्ट गो वॉच टेलीविजन, आई विल स्विच ऑफ एंड आई विल बी फाइन. छुट्टी ले पाता है, ऑफ कोर्स ले पाता है. अच्छा. Because we decide no when we want to work or not. The thing is that we also you have the luxury till your tickets are selling. Yeah. And you have no idea till when your tickets will sell, right? So the luxury is there till you're doing well. Next year my tickets don't sell. We have had this conversation on a very different context. Yeah. And if it doesn't sell, then you have to work harder. Then I think writer's block will affect you more because you have to come up with things. You have to up your game if that is your intention. डू यू थिंक अ लॉट कि यार कल टिकट्स बिकना बंद होगी तो क्या करूँगा? नहीं, कल टिकट, if tomorrow I stop selling tickets, what will I do? ये thought नहीं है, but I am realistic that it can happen that tomorrow I will stop selling tickets. So just, I think knowing that gives a little bit of peace, because then I'm like, I'm not surprised suddenly, like, you know, and then we'll see something. Like stand-up happened, we'll figure out something. और सर, मेंटल वेलबींग के लिए आप क्या करते हो? क्योंकि आई थिंक ये एक इनसिक्योरिटी तो Lot है of when you're- sex. Oh, sorry, what? हाँ जी, फिर से क्या करते हैं सर मेंटल पीस के लिए? Okay, sorry. Honestly, for mental well-being, lot of sex. ओके सर. Keep doing. No, I'm not. I'm kidding. I've never done sex. Listen, what I'm trying to say is, for mental. हाँ जी सर. I think people who have lot of sex have good mental health. दैट्स ट्रू. No, I'm asking you because. हाँ सर, दैट्स ट्रू. Okay, now you know. So, someone with experience, if they can say, then. बट मैं सर सोच रहा था आप योगा या मेडिटेशन बोलोगे. Oh, yoga and meditation also. Yeah. No, I think I don't know what I do for mental. I've mental health का इतना for a long time in life कभी सोचा ही नहीं क्या है. And then I think अभी सोच रहा हूँ. तो it is exercises. I think I'm not the qualified person to say, but for me I think physical exercise, meeting my friends, coffee, lot of समझ गया. coffee.
Lot of coffee. Yeah, that's a nice code word. Hey, I want to have coffee. See, the reason I'm saying lot of sex is because I don't have a lot of sex. That's the irony and that's the joke. Because I don't want youngsters to watch and feel that this is the way for mental well-being. Don't do sex. It's wrong. मतलब मुझे मतलब मैं आई एम नॉट वेरी एक्सपीरियंस इन पॉडकास्ट. मुझे पता नहीं इतना हंसना चाहिए नहीं चाहिए, बट आई एम हैविंग टू गुड टाइम No, शूटिंग दिस. not have sex. ओके ओके सर, मतलब थैंक यू सर. lot of great people have not had sex. Do you know this? But they've gone through times in life when they've not had sex. वो तो सर सबके साथ होता है. But great people, think about it. डोंट गो देयर. सर एक क्वेश्चन था मेरा. यू हैव अ वेरी डिफरेंट टेक ऑफ पिक्चर्स. जैसे कोई आपके पास आता है कि फ़ोटोज़ लेनी है या सेल्फी लेनी है. प्लीज़ बताइए, व्हाट्स योर टेक व्हेन समबडी अप्रोचेस यू फॉर पिक्चर्स? No, I don't enjoy taking photographs. Like when people come, if they like my work, when I'm in my personal space, if I'm with someone or I'm like with myself or I don't want people coming and saying if they like my work or not, which most people don't. They just come and ask for photo. I don't enjoy being clicked. I will get clicked with people I know. So my friends, my family members. But yeah, if I'm meeting someone where I say no to photos very politely, very nicely, and yeah, that's my. I think if people can come and say nice things, that's great. I'll be gracious and I'll say, but yeah, no photo. That photo, I feel the whole photo culture is a very pervasive, intrusive, all that I feel. Yeah. But I say nicely. I politely say no. बट ऐसे भी तो लोग होते होंगे ना जो फिर बाद में कि यार बंदे में एटीट्यूड है, फ़ोटो नहीं लेता. वो भी हो सकता है. लोग जो सोचेंगे उसको क्या ही रोक सकता है. अगर if someone takes a photograph, if comes for says can I take a selfie and I say yes, and if they go back feeling he is so humble, down to earth, that conclusion is also with this data is not correct, right? So दैट्स ट्रू. So that's, I mean, I can be humble, but this is not enough information or data to. लोग तो सोचेंगे. हम भी तो सोचते हैं. हाँ, वाली बात भी है सर. हम भी तो स्टार्स के बारे में सोचते हैं ऐसे, है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सर. एक और क्वेश्चन सर, क्योंकि ये जो बात कर रहे थे कि लोग आपके बारे में ये कहेंगे, बट यूट्यूब में भी तो आपको या फेसबुक पे आपको, इंस्टाग्राम पे अजीब अजीब से कमेंट आते होंगे. कोई ऐसा कमेंट जो दैट स्टैंड्स आउट कि किसी ने कुछ बोला आपके लिए? Oh, this is a very one of my YouTube videos में this one guy commented saying, Indian guy who saw a video and said कि he is nothing, Dave Chappelle is much better. Now which is Dave Chappelle is obviously, but I was like, it's a weird. The fact that I was compared, I felt was good. He's like Dave Chappelle is much better. So I was like, ठीक है, fair. Then one of my fans replied, "No, Rahul is better than Dave Chappelle." I'm like, "Shut up! This is not where you don't defend me here." Have you seen his monorail video? तभी पहली बार मुझे अपने खुद के stand up video पे थोड़ा सा ऐसा बुरा लगा. यहाँ पर when you're talking about Dave Chappelle, it's like saying कि someone says, you played cricket यहाँ पर. And then one of your friends said he plays so well, and someone else said नहीं, but Virat Kohli is much better. तो it's like that. And आपके दोस्त डिफेंड कर रहे हैं, नहीं सुरमीत का कवर ड्राइव और बेटर है. वो था. नहीं, बट थैंक्स अ लॉट सर. अब बस बिफोर वी एंड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रैपिड फायर राउंड खेलेंगे हम लोग. हाँ हाँ. व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट अबाउट एम्स्टरडम सर? लाइक व्हाट डू यू लव द मोस्ट अबाउट एम्स्टरडम? Not exactly Amsterdam, but the Tulip Gardens. But that's not Amsterdam, sir. That's outside Amsterdam? Yes. It's Greater Amsterdam. I love the museums. I love the pancakes. Yeah, Amsterdam I love the culture. And one more question. Who has it easier or who has it difficult? Men or women? Who has it more difficult? More difficult. Men. Women. मुझे लगा आप उनका आंसर दोगे. नहीं. When I say that, it obviously sounds like
बहुत ही ज़्यादा is trying to patronize women. I think women have it more. Women, What okay, do sir. you think? सर depends. मतलब कौन? कौन किस सिचुएशन में है. But What a weird. That was true for everything. बट मेरे का इसलिए तो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बता नहीं रहा हूँ. फेवरेट स्टैंड अप कॉमेडियन. Favorite Brian Regan. इंडियन स्टैंड अप कॉमेडियन. Brian Regan. No, Okay. no, sorry. Oh, Biswa Kalyan Rath. बिस्वा करोड़. Last time I said Kanan Biswa. 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 Currently Biswa. फेवरेट सिटी टू परफॉर्म. Bangalore. फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन. Maldives. Yes. फेवरेट मूवी. Andaz Apna Apna. No, Panchayatantram. It's a Tamil movie. फेवरेट क्यूजीन. Thai. क्राउड वर्क और स्टोरी टेलिंग. What is storytelling? iOS और एंड्रॉइड. iOS. टेक्सटिंग और टॉकिंग. Talking. इनविजिबिलिटी और सुपर स्ट्रेंथ. Invisibility. वाई. Why कैसा रैपिड फॉर्म है? हाँ? ठीक है. इफ यू कुड ट्रेवल बैक इन टाइम, व्हाट पीरियड वुड यू वांट टू गो टू 2 hours back. विदाउट दिस पॉडकास्ट. No, that's it. I would have been more excited. ओके. हु हैज इट इजियर, मेन और वुमेन? Women. Wow. See, that's where you... Why? There's no reason. नहीं, मैंने नहीं बोला ना वाई अभी आपसे. Why will you put this question? I just said the first word that came to my mind. लास्ट सर, बेस्ट थिंग अबाउट एम्स्टरडम. Best thing about Amsterdam? Tulip Garden. हैव यू बीन टू ट्यूलिप गार्डन? No, it's the best thing. But Tulip Garden is my favorite. Also, the museums are amazing. ओके सर. एनीथिंग एल्स अबाउट एम्स्टरडम? If you take one tulip and go to the museum, it's even better. Anything else about Amsterdam? The apple pies. Apple pies. Okay, sir, I'm done with my rapid Fire? rapid fire. There was too much Yeah. fire in the whole rapid fire The round. men and women question was not called for. My Okay. answer is men. I don't even know what answer is the right, what is the correct answer in that. ये मेरे को स्पेशली मेरी वाइफ शालिनी ने बोला था डालने के लिए क्वेश्चन. अरे इफ तो आप मुझे ईमेल कर सकते थे, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई सब रिकॉर्ड करने की याद है. ओके सर. बट सर, मुझे यहाँ पे आपके साथ ये पॉडकास्ट शूट करके बहुत मज़ा आया सर. मुझे भी बहुत मज़ा आया क्योंकि आप मुझे अभी खाना खिलाने वाले हो. अभी मैं आपको खाना खिलाने वाला हूँ इंडियन जगह पे जाके, बढ़िया. राइट. नहीं. इनने मुझे एक रिक्वेस्ट बनाई, इन्होंने एक डिमांड की कि ऐसी जगह पे जाके खाना है जहाँ का मैं नाम प्रोनाउंस नहीं कर पाऊँ. डिश का नाम. डिश का नाम. बट वेजिटेरियन. But vegetarian. Yeah. Sir, thanks a lot for coming to Thank Thamba you with for Lamba. having It me. was amazing and बहुत, मतलब मुझे नहीं पता इतना पॉडकास्ट करने वाले हंसते हैं कि नहीं हंसते, बट मेरा हंस के हालत ख़राब है. पता नहीं ये पॉडकास्ट कैसी आएगी. बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस पूरे पॉडकास्ट में है, अगर अपने मेंटल वेलबींग पे ध्यान देना है तो आपको करना पड़ेगा योगा. योगा. थैंक्स एवरीवन. थैंक यू सर. All right. Once again, thank you. चलो, sir. thanks. Bye-bye. Thank you, sir.